Everyone, today we are here again for our some questions. Then beta yesterday in our class, then we discussed there about their laws of motion. Okay, then in laws of motion we discussed about their force. Then force by using here laws of motion. There is a three laws of motion we discussed. That first Newton's first law. When your external force will be zero, then body will be remain in same state. And second law we discussed, if we are applying external force, there is some change in the momentum of the body, that we can say external force will be directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, F equal to dp by dt. And in third law we discussed, if there is a each and every action there is equivalent opposite reaction, कि किसी बॉडी का अगर एक्शन होगा तो उसका अपोजिट अमाउंट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलता है. Okay, so these three law we discussed. After that we discussed there is a some application related to the Newton second law. Newton second law को हम कैसे apply कर सकते हैं for find out acceleration, for find out tension, then find force, then how we can apply their Newton second law. Okay, then after that we discuss some forces which are acting when a body is moving on a plane, that hanging on with the help of the rope. Then different type of the force we discussed in last class. Tension, that normal reaction, these are the force, how they will be act, in which direction they will be act, because force is our vector quantity, that's why there need two direction also. Okay, then in last class we have done your connected motion also. When we are connecting two masses with the string, then how we can find their tension and acceleration. Now today we will discuss some question related to our some previous exam NEET and your IIT. Okay, now first we will see related with this chapter. Then first your question is there beta, that the distance covered by the body of a mass 5 gram having linear momentum is 0.3 kg meter per second in a 5 second. Okay, in this question we have to find out the distance, how much distance is covered, like this one. If here body is there, then its mass is given beta of this one body. First beta, first solve any question, we will write there each term which we are writing there. Okay, then 5 kg, that is gram only given, not your kg. 5 gram given, 5 gram. Okay, having linear momentum is this one. Linear momentum means we can write there P is equal to your 0.3 kg meter per second. Clear? This one is given in SI unit already, kg meter per second. So within 5 seconds, distance covered, this one body we are taking, its mass is given your 5 kg. तो ये बॉडी क्या कह रहा है कि कवर कर रही है लीनियर मोमेंटम, इस लीनियर मोमेंटम के साथ 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, कि यहाँ से या इसने 5 सेकंड कवर किया, ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, इधर पहुंच गई. तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर, ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा. क्लियर? So here we can write beta that momentum is equal to this one. Then as we know आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. देन फर्स्ट हाउ वी कैन फाइंड देयर डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस टर्म. T is given already, so which equation we can use there? First equation we are writing V equal to U plus AT. Here we can't use this one equation because S आपको find करना है, इस equation में नहीं है. Now second, S equal to your UT plus your half AT square. Clear? This equation we can use for find out S. Now next equation, V square minus U square equal to 2AS. This equation also beta we can't use because here change in velocity is not given. हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या given है, मोमेंटम given है. कहाँ से कहाँ velocity change हो रही है, this one is not given, only given our initial velocity, that initially this is moving with this momentum. So final velocity we don't know about this one. Acceleration also we can't find out using this one. That's why we can find S only. No, so we can't use this and this equation. We can use this one equation by using your first equation of motion only.
ओके, सो फॉर दिस वन वी कैन फाइंड देयर वेलोसिटी। अब इसके लिए क्या नीड पड़ेगी बेटा, वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या है इस व्हीकल की मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस सेकंड की 5 सेकंड के कि किस वेलोसिटी के साथ चल रही है। सो हाउ वी कैन फाइंड बेटा, फॉर फाइंड आउट वेलोसिटी एज वी नो दैट मोमेंटम आपको गिवन है, सो मोमेंटम हमें पता है दैट लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। सो बाय यूजिंग वी कैन राइट देयर v is equal to your p by m। we can write there p is given and m already given in our question, so p is equal to your 0.3। now beta 0.3 is kg meter per second, but this one is not in our SI unit, first we have to convert this one SI unit। तो SI unit means kg में convert करेंगे, for converting kg 0.05 kg, क्लियर। ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए वी विल यूज दिस वन। ओके, देन मास वी कैन राइट देयर 0.005। नाउ एज वी विल सोल्व दिस वन, देन हियर वी कैन राइट दिस वन बेटा पॉइंट, then here point we will remove, then here will be 1000 and this one point we will remove, then here we can write there 10। so here we can write there 5 205 से इसको कैंसिल करेंगे, then it will become your 600। okay, velocity is equal to 600। now we have to find out their s क्या हो जाएगा, clear। for find out s, then your v is coming here this one, then how we can write their s is equal to our your u t plus half at square। okay, it will be right now, then v is came out, after that one then we will use their s equal to ut, then put their velocity and time, then our answer will be there, but write always SI unit then meter per second, clear। then after this one we can write it like this, then our answer will be there। okay, like this one we will solve। now next question will be our two bodies of a mass of 4 kg and 6 kg are tied to the end of the massless string। the string passes over a pulley which is a frictionless। the acceleration of the system in term of the acceleration due to gravity। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ये आपको सिस्टम गिवन है बेटा, दिस वन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो बॉडी जिनका मास क्या गिवन है, 4 और 6 गिवन है, तो मासलेस स्ट्रिंग, दिस वन योर स्ट्रिंग योर मासलेस एंड देयर फ्रिक्शनलेस योर पुली। पुली क्या कह रहा है, फ्रिक्शनलेस है, here we will neglect its friction, then find their acceleration of this one। acceleration आपको find करनी, so how we can find, if let this one is accelerating in downward, because this one is more than this one as compared to this one, accelerate downward direction, tension कहाँ लगेगी, toward connecting point tension will be act there। बेटा कोई भी डायरेक्शन सिस्टम गिवन है, देन फर्स्ट वी विल इंडिकेट देयर ऑल फोर्सेस व्हिच आर गिवन इन योर डायग्राम। ओके, क्वेश्चन के अंदर किसी मास के ऊपर फर्स्ट हम ये फाइंड करते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। सो इफ योर टेंशन इज एक्टिंग इन दिस वन डायरेक्शन, देन वन फोर्स विल बी देयर ड्यू टू मास, एंड मास वी कैन राइट देयर m1g। if its mass is m1, its mass is m2, then we can write there m1g, and due to its mass then here we can write there m2। क्लियर। अब और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, दिस बॉडी इज नॉट कनेक्टेड विद एनी सरफेस, दैट्स व्हाई हियर टू फोर्सेज आर ओनली देयर, वन इज ड्यू टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वजह से मैंने बताया था, स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, टेंशन। ओके, और मास होगा तो उसकी वजह से क्या लगेगा, वेट। सो हियर आर द टू फोर्सेज, वन योर टेंशन एंड सेकंड विल बी योर वेट ओनली। वेट विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन कहाँ लगेगी, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। सो हियर टू मासेस आर देयर, देन टू इक्वेशन विल बी फॉर्म फॉर फाइंड आउट एक्सेलरेशन। इसके अंदर क्या फाइंड करना, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस वन फॉर मास, we can write there m1। m1 के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, this one is accelerating in this direction, so we can write there t minus m1g is equal to your t minus m1g equal to your m1a। okay, yesterday I told you how we are writing by using your Newton second law, F equal to ma। ये यूज करते हुए हमें क्या बनानी है, अपनी फोर्स इक्वेशन बनानी बेटा। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन इज इक्वल टू योर मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ पुट देयर वैल्यू, इफ एनी टर्म इज गिवन, मास इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 4 kg, so 4t minus 4g we can write बेटा 10। if not given in our question, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओके गिवन नहीं है, देन फॉर द राउंड ऑफ देन वी कैन यूज देयर 10।
equal to mass again your 4 kg into your acceleration is equal to your acceleration, we have to find out, not given na, we can't take g, we can take their 10, but acceleration we have to find out, keep as it is. So this one equation will be t minus 4t equal to your 4, we can write it first equation. Clear? This one came our first equation using this one diagram. Okay, now we will use their second equation for your second mass. जितने भी मास होंगे बेटा सिस्टम में उतनी इक्वेशन बनेगी, that is need for this one. Again we are force second equation, Newton second equation again we are using. Now accelerating downward direction of this minus this, we can write here total force on this one m2g minus t equal to your ma. Okay, this one mass we are taking m2, that's why here we will write there m2 and acceleration we will write there a only. Clear? Now in this equation we can put value of m की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ गिवन आपको 6 kg, क्वेश्चन में क्या गिवन m2 6 kg गिवन है, that's why here we can write there 6 into g we can write there into 10 minus t equal to your m2g, m2 आपको given again your 6 only, then a. Clear? So this one equation becomes your 60 minus t equal to your 6a, this becomes your second equation. Clear? Now we will solve both equation, दोनों दो equation आगे बेटा आपको acceleration find करना, using these both equation then we can find their acceleration. बेटा yesterday हमने इसका formula भी किया था by using derivation, then you can use direct that formula also. Okay, if you not remember that formula then you can use this one method. Clear? But better if you learn that formula. Okay, that will be time will be short. Okay, that's why you have to learn that formula, you can use that formula. Clear? But this one formula you can use if your two masses are there, if there is a more than two masses then there we will make their force equation बना के इसको सोल्व करेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा. ओके, in that more than two masses then there is a not having formula for this one. So here using these both equation then we can write there adding both equation, दोनों equation को add करेंगे बेटा, adding equation 1 and 2. Clear? दोनों equation को add करेंगे, so t to t cancel out, add करने के बाद here will be left your 20 and equal to your adding both equation then it will be your 10a. Clear? So your answer will be there, your options are in form of g na, that's why no need to your this one write their value of g, क्योंकि पहले आपको ऑप्शन देखने, सॉरी बेटा आई हैव नॉट सीन ऑप्शन में क्या गिवन है बेटा, जी ही गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट पुट वैल्यू ऑफ योर जी ओनली. क्लियर? हमने यहाँ पे वैल्यू जी पुट कर दी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट विथ योर जी वैल्यू, राइट योर 4g ओनली minus your 4g only, and here we will write there 6g only. Clear? So here we can write there, here we will write there this one here 2g only, 2g minus 4g plus 6g, then here left here 2g only, because need your answer in g only, that's why a we can write there 2g by your 10. Okay, so this one our which one will be right option, then we can take their d will be right option, these are all are wrong option. Okay, like this one we can find their acceleration. अगर क्वेश्चन में कहता है बेटा find their टेंशन भी आपको find करनी है, so using both equation then we can solve this one, put value of a here in any equation then t will be come out. ओके अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करनी, आपको टी फाइंड करना, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन योर टी विल बी कम देयर. ओके, नाउ योर नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू मासेज ऑफ m1 एंड m2. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस वन योर प्रीवियस ईयर ऑफ द जे एग्जाम, m1 m2 दो मास ले रखे बेटा, टाइड टुगेदर एट द टू एंड ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. ओके, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ टाई किए गए, पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली के साथ, व्हेन मास m2 इज द ट्वाइस ऑफ द मास m1 देन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज a1. ओके, वो क्या कह रहा है कि व्हेन मास ऑफ m2 जो मास है वो क्या है,
दैट इज ट्वाइस ऑफ द मास m1। क्लियर कि अगर ये मास m1 है, ये m2 है, अगर ये मास क्या हो रहा है m1 का डबल हो रहा है, व्हेन m2 इज ट्वाइस ऑफ दैट m1। ओके, m2 क्या हो गया, डबल हो गया ऑफ m1, वी कैन राइट देयर 2m1। ओके, m2 इज ट्वाइस ऑफ m1, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है सिस्टम की, देन एक्सेलरेशन बिकम्स योर a1। दिस वन योर फर्स्ट कंडीशन गिवन। क्लियर, उसके बाद कह रहा है व्हेन मास m2 इज थ्राइस ऑफ द m1। ओके, जब m2 क्या हो गया, m2 बिकम्स योर 3 टाइम्स ऑफ m1, तो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बिकम्स योर a2। क्या बन गई, a2। दिस वन आवर सेकंड कंडीशन। क्लियर, फर्स्ट बेटा रीड योर क्वेश्चन केयरफुली, देन राइट विच आर टर्म्स आर गिवन इन आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले उसको अच्छे से लिखो, तब समझो बेटा फाइंड क्या करना है, क्या फॉर्मूला हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर m2 का मास क्या हो जाता है, m1 से डबल हो जाता है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, a1। अगर उसका 3 टाइम्स हो जाता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, a2 हो जाती है। क्लियर, तो यही दोनों कंडीशन हमने अपने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अगेन वी आर अप्लाइंग दिस वन हियर अगेन यूर ऑफ m2 की वजह से हमारा फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स वेट, देन m1 योर g एंड सेकंड इज एक्टिंग योर टेंशन अपवर्ड, ड्यू टू दिस वन अगेन योर m2 g and second one your force your tension toward the connecting point. Again we will apply their same equation of motion for this one. For finding this one equation of motion, then we can write there 4 direct. I am using this one because already we have solved beta so many times. So m1 mass m1 के लिए हम यूज कर रहे हैं, if this one is more than this one accelerating this one direction, so we can write there t minus your m1 g is equal to your m1a by using Newton's law force equation हम बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, m1 t minus m1 m2। क्लियर, सेम फॉर दी मास m2 के लिए हम बनाएंगे m2 कैपिटल M, ओके, नॉट स्मॉल m, गिवन कैपिटल M। Clear, for this one equation we can write there m2g minus t equal to your m2a। clear, तो कह रहा है कि that is this one if mass of this one becomes your m1, ये रिलेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है आपकी, a1 एक्सेलरेशन हो रही है। क्लियर, m1 we can, m2 we can put there 2m1g minus t equal to 2m1a1। ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। क्लियर, अब इससे सोल्व करेंगे तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे रिलेशन चाहिए रेशियो ऑफ a1 एंड a2। a1 एंड a2 फाइंड करना है, बाय यूजिंग दिस वन वी कैन फाइंड देयर a1, सो बाय एडिंग दिस वन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, इस तरीके से हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्लियर, 3 और 4 मैं एक का फाइंड कर रही हूँ, सेकंड का रेशियो आप फाइंड करना a2 का, देन फाइंड द रेशियो। नाउ हियर दिस वन ऐड, बोथ दोनों को ऐड करेंगे, देन t कैंसल आउट। अब हम इसको और इसको ऐड करें तो यहाँ से t कैंसल हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m1g 2m1 minus m1g, then here left your m1g, now here m1a 2m1b, we are adding this one, then here will become 3m1 a1। clear, so m1 to m1 cancel out, then a1 we can write there g by 3, this one here a1। सेम बेटा ऐसे ही हमें फाइंड करना a2। ओके, a2 हम फाइंड करेंगे, a2 जब मास क्या हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है, ऐसे इक्वेशन बनाएंगे फॉर सेकंड कंडीशन। ओके, वी आर अप्लाइंग देयर सेकंड कंडीशन वी विल अप्लाई। क्लियर, व्हेन योर m2 बिकम्स योर दिस वन, सो t माइनस m1g फर्स्ट मास के लिए हम अप्लाई करें, m1g इज इक्वल टू योर m1a2। क्लियर, देन फॉर द सेकंड m2 क्या हो जाता है आपका, m2 विल बी देयर m2 सेकेंड मास के लिए m2g माइनस टेंशन इक्वल टू योर m2a2। सो m2 बिकम्स योर 3 टाइम्स ऑफ m1, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है a2, तो m2 वी कैन राइट देयर 3m1
G minus T equal to your M2 A2. क्लियर? अब आपके पास क्या आ गई, दिस वन योर फिफ्थ इक्वेशन, दिस वन आवर सिक्स्थ इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देन हियर वी कैन राइट, बेटा सोल्व करेंगे, देन एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दिस एंड दिस इक्वेशन. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा. सो हियर लेफ्ट योर 2m1 योर g इक्वल टू योर दिस वन योर हियर ऑल्सो चेंज ना 3m1. ओके, यहाँ भी m2 को चेंज कर लेंगे 3m1 एंड हियर m2, देन इट विल बी गिव अस दैट 3 and this one will be a 4m1 8. Clear? m1 m2 can m1 cancel out, so your a2 will becomes your a2 equal to your g by 2. Clear? a1 equal to this one, a2 equal to your this one. Now here a1 our came क्या आया, g by 3, a2 equal to our g by 2. क्लियर? आपको क्या निकालना है, रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट a1 by a2. सो a1 a2 का रेशियो हम निकाल देंगे. सो हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो, g to g cancel out, then it will be a 2 by 3. Clear? So check there which one right option, then here will be B will be right option. Like this one we can find beta, this one your simple question by using your force equation. Okay, Newton's second law we have to use, then their ratio we can find there. Next your beta equilibrium condition of body of mass 60 kg. Body has इसका mass 60 kg suspended by the mean of the three string PQR. PQR three string ले रखी ना figure. Equilibrium tension in the string is P. ओके, टेंशन आपको फाइंड करनी है, इसके अंदर कितनी टेंशन हो जाएगी, तो इसकी टेंशन इधर लग रही है. क्लियर? दिस वन फोर्स. ओके, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इसका मीनिंग क्या रहेगा बेटा, जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं सब फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल अपोजिट रहेंगे. इधर वाला फोर्स क्या रहेगा, इस फोर्स के इक्वल रहेगा. दिस वन फोर्स इज इक्वल टू दिस वन फोर्स. नाउ आर इज दिस वन, दिस एंगल योर थीटा. नाउ दिस एंगल वी कैन राइट देयर थीटा. यस और नो? इसको थीटा रख सकते हैं. देन दिस वन कंपोनेंट वी कैन राइट देयर आर cos 30 एंड दिस वन कंपोनेंट वी कैन राइट देयर आर sin 30. क्लियर? ये कंपोनेंट r sin 30, दिस वन कंपोनेंट r cos 30. अब दिस वन फोर्स इज इक्वल टू, अब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो हम ये कह सकते हैं दिस वन फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स. अब हम q को फाइंड कर सकते हैं बेटा, दिस वन फोर्स इज इक्वल टू योर वेट ऑफ दिस बॉडी mg एंड वेट इज आवर 60 into your 10, then it will be your 600 kg. Clear? So we can write there by using your diagram, by using your equilibrium condition. So we can write there Q is equal to your 600 kg. पता चल गया ना कैसे आया, दिस वन फोर्स इज इक्वल टू दिस वन. अब हमें पता Q इज इक्वल टू योर R sin थीटा. थीटा इज इक्वल टू 30. अब हम 30 निकाल लेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी 60. आपका Q क्या आ रखा है, Q इज इक्वल टू 600 R sin 30. ओके, देन R sin 30, देन R we can write beta 600 into your, sorry, this one will be R sin theta, we can write this value will be equal to your 1 by 2 only. Okay, value of sin 30. This one will be 2 here, then it will be your 1200. R will be this one force Newton. So this one force R cos theta is equal to this one. Equilibrium में क्या कहेगा, equal opposite force रहेगा. P we can write there R cos 30. ओके, देन R की वैल्यू हम पुट करेंगे जो यहाँ से फाइंड की है, देन इट विल बी गिव अस 1200 into your cos 30 under root 3 by 2, then it will become beta 600 under root 3. This is the value of P. अब ऑप्शन में इस तरीके से गिवन है. नाउ हियर वी विल पुट देयर under root 3 value 1.7 something, then solve it, then your answer will be there. Which one is the right option, then comment us. Okay, so like this one we can find their forces when their system is given in the equilibrium condition. Okay, thank you for watching our video.